तो shall we start? शुरू कर सकते हैं? परमिटेड? ओके, थैंक यू. सो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, हम किस संदर्भ में बात कर रहे थे पिछली क्लास में? इससे कुछ आइडिया नहीं मिल रहा. मिल रहा है? क्या बात कर रहे थे हम? नहीं, वो पुरानी बात हो गई. ट्रांसमिशन ऑफ सेंसेशन. ट्रांसमिशन ऑफ विथ सेंसेशन. कॉन्शियस सेंसेशन जो हमें महसूस होते हैं, उन बात कर रहे हैं हम. सो ट्रांसमिशन ऑफ द somatic sense at the conscious level involves various sensations we have seen. Main are related to the different types of the touch, temperature and pain. Out of them, touch sensation is the most elaborate sensation in the body, and surprisingly, this is the sensation which is transmitted by a dual pathway system. उसके दो पाथवे हैं और किसी सेंसेशन के दो पाथवे नहीं है. Why it is necessary to know about the dual pathway is that the ascending fiber tracts in the spinal cord which are involved in the transmission of the touch sensation, they are located anatomically at different places. Okay, and by knowing the neurological deficiency in a person who has got spinal cord injury or otherwise the disease process is there, then finding out the deficit, we can know that at which part of the spinal cord the damage has taken place. That is the requirement of knowing the sensation in which they are carried. Mind it, we have seen that all the sensations which enters into the spinal cord, the sensory fiber cell body is located in the dorsal root ganglia. ये मोटी बात है. The central process enters into the spinal cord through the dorsal horn. Okay. Now for different types, for those fibers, no talking. For those fibers which are transmitting the crude touch sensation, just knowing that the body has been touched at certain place, crude touch sensations follow a different pathway than those fibers which are carrying the fine touch sensation. Fine touch वाले अलग pathway से जाते हैं, crude touch वाले अलग pathway से जाते हैं. So these fibers behave differently. क्यों? उनका diameter भी अलग है, conduction velocity भी अलग है, और वो behave भी अलग ढंग से करते हैं, carry भी अलग ढंग से हो रहे हैं. ठीक है. So large diameter fibers which carries the most important sensation of fine touch, vibration, localization, posture and position sense. They are large diameter fibers and they are present in the posterior white column of the spinal cord. अभी डायग्राम आएगा उसका. ठीक है. So all those fibers which are of larger diameter and carry sensation from the type second fibers, mechanoreceptive sensation, entering the spinal cord, dorsal horn, they divide into two branches. अभी डायग्राम आएगा. They divide into two branches. One is the caudal branch, अंदर घुसे ये, और ये एक caudal branch जो मैं डायग्राम बना देता हूँ, इसमें नहीं पता लगेगा. This large diameter fiber, which is carrying the special sense of vibration, position sense, fine touch, divides into two branches after entering into the dorsal horn.
the lower branch, which is directed downward, ends into the spinal cord, we can say synapses in the spinal cord, and is responsible for the local spinal reflexes which may arise as a result of entry of that sensation. Then the rostral branch, ये caudal branch है जो ये ऊपर जाएगी वो rostral branch कहलाएगी, ऊपर वाली branch. This branch enters and ascends upward. Okay, these fibers which are going upward have not relayed yet, so they are first order neurons. They are first order neurons. They are not relayed. Ascends upward into the dorsal column and reaches to the level of the medulla oblongata, where they synapses and ends into the nucleus gracilis and nucleus cuneatus. Cuneate and gracile nucleus, they end there. The fibers which ascend into the spinal cord, mind it, how do we localize? अगर मान लीजिए डैमेज हुआ है तो सेंसरी लॉस हुआ है तो डैमेज कहाँ हुआ होगा? द फाइबर्स विच आर एंटरिंग फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो नीचे से घुस रहे हैं सबसे पहले, दे आर अरेंज ऑन द मीडियल साइड. ये मीडियल साइड में आएंगे. जो नीचे से फाइबर्स है, लोअर फाइबर्स आर कमिंग एट दिस प्लेस, and as the fibers are entering from more upper parts of the body, they are arranged in the यहाँ पे लगते चले जाएंगे. So this part contains the fibers which are from upper part of the body only, while these fibers are from the lower part of the body. They form two tracks. One track is from the lower part of the spinal cord to the highest level, and second is from the thoracic level to the upper level. Tract of Gall and tract of Bardak कहते हैं उसे. ओके, और क्या नाम हो सकता है इसका? Fasciculus gracilis and fasciculus cuneatus नाम हो सकता है. So these fibers are ascending upward and they are topographically arranged into the posterior white column. Okay, ascending upward, they, as I said, they relay into the medulla oblongata, nucleus gracilis and nucleus cuneatus. At that level, the first order neuron ends. The second order neuron is located in these nuclei, and the fibers of that second order neuron arises and again divide into two branches. It again divide into two branches. अब ये ऊपर पहुंच गया medulla oblongata में, nucleus gracilis and nucleus cuneatus same side में. अभी fibers have not yet crossed because they are first order neuron fibers. But as the rule we have seen, second order neuron must cross to the opposite side. तो हमारा कंसेप्शन बिल्कुल बदल जाएगा. जो फाइबर इधर से थे वो दूसरी तरफ चले जाएंगे. So at this level, the fibers have relayed nucleus gracilis and nucleus cuneatus. The second order neuron is located here. It divides into two branches again. One is the lateral branch, another is the medial branch. उधर जो जा रही है वो lateral branch है, इधर जो आ रही है वो medial branch है. Lateral branch fibers, they do not cross to the opposite side. They ascend slightly upward, enters into the inferior cerebellar peduncle and are destined to the cerebellum. So the same sensation which is going upward is relayed to the cerebellum at the subconscious level. Cerebellum में जो information पहुंच रही है वो हमें पता नहीं लगेगी, वो subconscious level पे आ रही है, and that is required for the maintenance of the tone, posture and equilibrium. The fibers which are coming on the medial side, so these fibers which are destined to the cerebellum, they are known as external arcuate fibers. घूम के जाते हैं थोड़ा तो arc बनाते हैं वो, external arcuate fibers, while the fibers which are coming on the medial side, they cross to the opposite side now and they form the internal arcuate fibers. So these internal arcuate fibers now cross to the opposite side and come on the other side of the brain, or the क्या कहते हैं brain stem की तरफ आ गई है. The arrangement of these fibers now changes completely, reverse हो गया वो. यहाँ पे मीडियल साइड, लोअर साइड मीडियल साइड में रिप्रेजेंट हो रही थी, ये वाले फाइबर मोस्ट मीडियल थे, ये वाले फाइबर लेटरल हो गए. अब जब क्रॉस करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा पैटर्न, ये फाइबर लेटरल साइड में चले जाएंगे और ये फाइबर मीडियल साइड में.
So topographical arrangement of the fiber changes as the fiber cross to the opposite side. These fibers which are crossed to the opposite side forms, or we can say joins, the main ascending pathway in the brain stem that we call as the medial lemniscus system. Medial lemniscus system or dorsal column pathway जो चल रहा है ऊपर की तरफ. Okay, so these fibers form the medial lemniscus, or we can say joins the medial lemniscus, ascends upward into the brain stem, reaches to the level of the thalamus where these fibers are relayed. So all second order neurons of the brain stem, they relay into the thalamus. They cannot bypass the thalamus. वहाँ end होना ही होना है. So all second order neurons must enter and relay into the thalamus. The same topographical arrangement which was there in the brain stem is also maintained at the level of the thalamus. Then in the thalamus are located the third order neurons. Okay, the fiber ascend upward. These fibers arising from the thalamus going to the cerebral cortex, they are known as specific thalamocortical projection. Specific है, एक खास न्यूक्लियस से अराइज हो रहे हैं और एक खास जगह पे जा रहे हैं, फैल नहीं रहे बेतरतीब से. So they are known as specific thalamocortical fibers. The thalamic nuclei which receive this information is the posterior-ventrobasal complex or posterior-ventrolateral and posterior-ventromedial nucleus, PVM and PVL nucleus, which collectively can be called as posterior-basal complex of the thalamus. So all sensory information जो हमने बात की है और जो नहीं की है वो सारी की सारी इन दो न्यूक्लियस में आएगी थैलेमस के अंदर. And from this specific thalamic nucleus, the fibers or information is relayed via the third order neuron to the post-central gyrus, sensory cortex or somatosensory area 3, 1 and 2. That is the termination of the sensory fiber. So that is the termination of these fibers of the which are carrying into the dorsal column pathway. Now, the crude touch does not follow this route. The fibers are either thinly myelinated or non-myelinated. They conduct very slowly. Their cell body is also located in the dorsal root ganglia. Enter into the spinal cord and relay into the dorsal horn. They relay into the dorsal horn neurons. Then the second order neuron arises. तो ये जो फाइबर्स आ रहे हैं क्रूड टच के, crude touch fibers arises, ये peripheral process है, they relay over here and they can give multiple branches also. Second order neuron is located in the dorsal gray matter of the spinal cord. The fibers cross to the opposite side and ascend upward as lateral or anterior spinothalamic pathway. So crude touch follows the different pathway. Fibers enter the spinal cord, relay into the dorsal horn. Second order neuron is located in the spinal cord. Fibers arising from the second order neuron as the result must cross to the opposite side. These fibers cross anterior to the central canal. Remember, fibers cross anterior to the central canal, and depending upon the type of the sensation they are occurring, crude sensation is being transmitted by the anterior spinothalamic pathway, while the other, this carries different sensation, pain and temperature is being carried by them. So these fibers give multiple collateral branches in the spinal cord, again for the local reflexes. Fiber cross anterior, ये जानना जरूरी है कि anterior cross करने से क्या फर्क पड़ रहा है, posterior cross करने से क्या फर्क पड़ रहा है. क्योंकि अगर if there is a dilatation or herniation of the central canal, then which fibers will be damaged? डैमेज क्या हुआ है उससे हम पता लगा सकते हैं कि herniation posterior side में है, lateral side में है या anterior side में. That is the necessary of knowing the dual pathway. So these fibers also ascend upward as anterior spinothalamic pathway or lateral spinothalamic pathway, ascending to the brain stem. Then it joins the medial lemniscus again. Fiber joins the medial lemniscus. तो सब कुल मिला करके उसी में जा रहे हैं. Ultimate ascending pathway is the medial lemniscus system. Okay. Now these are the fibers which are entering at the spinal cord level.
from the face area, all sensations are transmitted by the different branches of the trigeminal nerve. Okay, ophthalmic division, maxillary division, and mandibular division. Mandibular division you know has got two dual component. It is motor also, sensory also. दोनों component है उसके अंदर. So from the face area, the fibers enter into the brain through the trigeminal nucleus and enter and release into the medulla oblongata and form the trigeminal lemniscus. तो एक स्पाइनल लेमिनिस्कस बना, एक मीडियल लेमिनिस्कस बना और एक ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस बना. तीनों मिलकर के ब्रेन स्टेम में कहलाते हैं मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे. तो इसमें सारा सेंसेशन आ गया, लोअर पार्ट का आ गया और फेस एरिया का आ गया. तो ऑल दी सेंसेशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, they are carried by the medial lemniscus system, relayed into the posterior-basal complex of the thalamus, from the specific thalamocortical pathway relayed into the post-central gyrus or somatosensory cortex S1 और ब्रॉडमैन्स एरिया 3, 1 and 2. ये सारा इसी में आ गया. दैट यू कैन सी टच फाइबर्स दो में डिवाइड हो गया, एक ऊपर चला गया अनक्रॉस फाइबर्स है और ये यहाँ पे रिले हो गए, ठीक है, और ये क्रॉस होकर के अपोजिट साइड में चले. दिस इज सेकंड This is the somatic arrangement. Vagal part, lumbar region, thoracic region, and the cervical region. Fibers are arranged to congratulate the same arrangement is seen in the anterior spinal surface pathway and the lateral spinal surface pathway. For this is the sensation, temperature, mood. So, dorsal column pathway. This is faster conductive pathway, this conducts faster than the other sensations in the body because the fibers are deeply polygated. The myelin sheath is different बढ़ने से conductive velocity को बढ़ जाती है. There are two things. Larger diameter fiber, maybe a non-myelinated fiber or a myelinated. Myelinated fiber is demyelinated or demyelinated. So those के तो conduction velocity बढ़ा है. एक तो fiber diameter और दूसरा thickness of myelin sheath is also different from the diameter. तो दोनों अलग-अलग तरह के कैसे बढ़ा रही है? More diameter non-myelinated fiber will connect faster than the जो ज़्यादा diameter का fiber है, भले ही non-myelinated हो, ज़्यादा faster connect करेगा. अगर myelinated से conductive velocity बढ़ती है. There are two reasons. इसका कारण myelinated any idea? सॉल्वेटरी कंडक्टर एक एनिमेटेड फाइबर नहीं हो रहा है और मोटे वाले फाइबर नहीं हो रहा है. फर्क क्या है? एक फाइबर में 20 मीटर तरीके से इंटरनोडल डिस्टेंस की मोटा कहा जाता है. एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, यहाँ पे होगा. इंटरनोडल डिस्टेंस जो बढ़ता है तो कंडक्शन वेलोसिटी बढ़ जाता है. दैट इज द रीजन बिहाइंड इंडक्शन इन कंडक्शन वेलोसिटी. So dorsal column pathway transmits lateral vibration, fine touch, pressure, tactile vibration, and tactile sensation. Very important. Movement against wide position, wide movement, progress circle. सबसे important है एकदम के अंदर sensation जो because this
नहीं, जहाँ से कोई बना माइनस महसूस होता है, बाकी और कोई विषय ऐसा नहीं है जो लोकलाइज पार्ट को हमको महसूस होता है। तो सेंसेशन ऑफ दैट होता है साथ ही बहुत another feature of this part is the water color more than 80% fibers are first order neurons. अब यहाँ पे जो डायग्राम दिखाया था उसका था फाइबर आए रोशनी के ऊपर लगे तो डॉक्टर कॉलम बना रहे हैं, मगर हम यहाँ कह रहे हैं कि 80% ही फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, 20% फाइबर का सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन को ये कहाँ से आए? These are the fibers which are transmitting fast pain sensation. पेन दो तरह का होता है, आगे पढ़ेंगे। ये दो तरह का होता है, आपने फिर करवाया था इसमें लड़ाई से दर्द हो गया, आपको बताया सांस किया गया, उसको हटा दिया, और दर्द का फील हो रहा है और ज्यादा एरिया में महसूस होगा सबके पास ये स्लोप है, इमीडिएटली जो लड़ाई हो रहा था सांस किया तो पास में और जो हटाने के बाद भी आप देख सकते हैं और ज्यादा देर में महसूस होता है स्लोप है। इन दोनों के फायदे अलग है, इन दोनों का फायदा so fibers of the fast phase after acting into the spinal cord, they relay there for the local device, new branches cross to the opposite side, axons after crossing each way one the dorsal lemniscus fast. Fast phase को काफी अलग हो गया, तो dorsal column कैसे चलेगा? They are second order neurons. So dorsal column fast will contain 20% of the fibers which are cross fibers. All fibers definitely are migrated. Dorsal column में non-migrated fibers नहीं होते. What they carry? They carry sensation which require rapid attention of the body and fast activity. जब भी response अगर करना है आपको like practice, then the fibers have a little bit down with energy. Dorsal column fast. Fibers are moved central and active, followed by the dorsal wrap and the somatotropic organization. एक के बाद body clearly arranged होता है. That arrangement is known as somatotropic arrangement. That we already seen. Fibers from the lower part of the body are medially, higher body part is laterally. Thus, organization is maintained at the level of the medulla and even at the level of the thalamus. Fiber crossing at the level of the medulla oblongata and localization. This is important. All the sensations transmitted by the dorsal column are sensations are localized very precisely from where they are situated. Sensation कहाँ से आ रहा है? Precisely localized होता है fiber के पास और उसकी ग्रेडेशन की हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। ज्यादा तेज से लगाया, हर तेज से लगाया तो मैग्नीट्यूड नहीं हो पाता, ये आपका पाथवे। So the second pathway for carrying sensation is the anterolateral ascending. Anterior spinothalamic tract and ventral lateral spinothalamic pathway. क्या path है? It is formed by the axon of the second neuron. Second order neuron से बनता है ये पाथ, जो first order neuron से बनता है, ये second बनता है. So all these fibers are present in the anterior column, right column, or lateral right column. All are cross fibers. They are second order neurons. And the process is occurring when the anterior condition. मतलब जैसे प्रकार anterior side. Plus this process is also very difficult. तो यहाँ पे दिखाई होगा क्या? Fiber subsurface. The root surface. Will enter into the spinal cord at this level. You stay there and cross to the foot side of the shoulder. The other upper and then the fiber subsurface is thermal cell. Fiber cord external they cross anterior to the column. Okay, anterior to the canal, but cross completely upward and एक फाइबर जो होता ऊपर दूसरा फाइबर जो होता नीचे हुआ और पूरा उंगली के ऊपर तीसरा फाइबर जो पेन लेके आ रहा है उसी से
क्रॉस हो रहा है एक्चुअली वही सबसे गुड होती है इस पर्पस पर ये आप देख रहे हो थर्मोडायनामिक्स का रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ नहीं होता फाइबर क्रॉस कर रहे हैं अगर उगली के क्रॉस कर रहे हैं तो कुछ लेवल पे करनी है तो उसके बाद that is the difference between the difference and the country of the तो जब मैं 10 करने में मदद करता है इनका कहाँ होगा फाइबर कंपनी क्रॉस कर रहे हैं साइड की उगली के क्रॉस करेगा वो इसके हमारे फाइबर ऑर्गन पर आएंगे हम हमारे थोड़ी उगली को अपनी वाले और भी एंटी या एंटी that paper fiber quality fibers are both types magnetic fiber and non-magnetic. Magnetic fiber को ये एक का fiber and fibers are non-magnetic. Because the fibers are mainly magnetic and non-magnetic, the transmission velocity of the vibration is very slow. And these threads arises from the dorsal row of वहाँ से आगे fiber से from the laminar core first core to that ये जो लैगिना बनते हैं खाने पहुंचते हैं तो हमने ये भी बच्चे का यूज किया है उन्हें 6 नंबर करते हैं और वाइट पे these fibers also show the chromatographic organization fibers from the lower part इनके क्या उल्टा हो गया क्योंकि एंटीरोलेगल सिस्टम है तो यहाँ पे फाइबर लोअर पार्ट से बाद में है क्रॉस होते और जो ऊपर पार्ट से वो नीचे जा रहा है चेंज So it transmits same thermal strength, food touch, extractor, chemical and intensity. Because of fibers are of low grade, intensity or density of research are less, so localization of the signal is poor in this condition. So NTSC the government of the different levels. Already got them. Okay, you can flag. Yeah. What's the file go? There's only one. All fibers entering into cerebellum are only fibers. So you know that you nasal and cerebellum will cover. वो सारा इनपुट आता है मुझे फाइबर तो एक शो करता है जो फाइबर का what is that group? Group meaning reason to be planning fiber. Only one inferior olivary nucleus. Inferior olivary nucleus is the core of planning fiber. And they play a very important role in the activity of animation body, but can be fiber very well. That we have seen, medial laminar system is joined by nitrogen laminar endothelial system and form the medial laminar system. All types of the protein in these systems are related to the cell. Yeah, a part of another part. All cell systems of all types of the body are related to the cell. Because essentially जाएगा, cortical भी जाएगा भी जाएगा. एक का genital body, दूसरे genital body. Only one sensation is different by part. Also, उसका मगर also goes to the thalamus. So second order neuron is going to be posterior-ventral complex reduction of the thalamus, posterior-ventral medial nucleus. Third order neuron is into the post-sensory virus, somatosensory cortex, anterior part of the parietal lobe. Just behind the ventral sulcus. Ventral sulcus is physical area, somatosensory area, S1 कहते हैं. And it's also classified from the area A1 and 2.
भाई देखो मेरी आवाज पता नहीं तुम सब सुन रही है देखो तुम्हारी आवाज मेरे में जरूर आती है तो इसको रोको बात समझ आ रही है ये जो तुम बात कर रहे हो या तो धीरे बात करो तो यहाँ तक आवाज नहीं आए या बाहर चले जाओ या मैंने देखूंगा कि तुम इससे थ्रू आउट कर पाऊंगा नो प्रॉब्लम जस्ट लीव इट नाउ देखिए बेशंगी चल रही है लगता है कुछ माय ओरिजिनल So that is the behavior of the neuronal pathway in others. In this cycle of the that can be developed in cells. Now dorsal column pathway, if it is valid, what can cause damage to the dorsal column pathway? So the sensory activity is very local in this case. तो क्या क्या कारण हो सकते हैं dorsal column pathway में functional deficiency seen in subacute combined intervention of the spinal cord. ये क्या चीज है बड़ी हुई है तुम्हारा subacute combined intervention of the spinal cord means what? Ever heard of this term? सुना है इस term के बारे में नहीं सुना होगा जरूर सुना होगा network condition anemia hypohydria hypohydria पढ़ा है एप्लीकेशन बाकी तो पहले का पढ़ा है इंट्रिंसिक फैक्टर एप्लीकेशन लेकर स्टेज ऑफ दैट एनीमिया देयर आर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन द कंट्रोल विलंबन से टर्मिनेशन फैक्टर या जो पढ़ रहा है कैसा लगता है इमेज दिख रही है उसको कहते हैं नंबर है सिग्नलिंग फैक्टर दिस इज कॉल्ड डिस्टर्ब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एट द लेवल सिस्टम like that some because of the damage to spinal cord that is called as a subacute combined deficiency spinal cord. This is a manifestation of the vitamin or intrinsic factor deficiency, not vitamin B12. Intrinsic factor deficiency. So that is first thing where the large myelinated fibers are damaged. Dorsal column pathway contains large diameter myelinated fibers. Okay, damage. Second is multiple sclerosis. This is an autoimmune disease. This is autoimmune disease affecting connective tissue as well as the central nervous system. Brown-Séquard syndrome is a recurrent where there is a damage to the spinal cord. आगे करते ही मान लीजिए बहुत बार हो सकता है जी कर सकता है तो लोग
डॉक्टरी का नाम सुना है? ये डॉक्टरी इसलिए neuropathy because of many reasons. Disease of the nerve fiber cell failure and complete transaction of the spinal cord. These are the factors which are now all the which are going to damage to the nerve and then neurological damage. With the termination with the central circle dotted line with the fourth central line S1 area 3 minus 2. So all the fibers specific thalamocortical solution arising from the posterior complex of thalamus not only send fiber or relate fiber here but the same fiber or formation relate at the base lower portion of the somatosensory contact called area S2. So this area S2 is basically sensory formation. All sensory formation but in a very small area. बाकी सोमैटोसेंसरी फॉर्मेशन इतने बड़े एरिया में आ रही है अब एक तरफ जा रही है मगर वो सारी इंफॉर्मेशन एस2 में जा रही है तो ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वो साइड ऑफ द बॉडी बाय द इज एक रिसीविंग एरिया एस2 और प्राइमरी सेंसरी कमिंग एरिया दिस इज अ body representation. That's very homunculus representation. So, great central representation. One thing is very clear in this diagram that those body parts in human beings which are where the receptor density is maximum, where the sensation is very critical. यहाँ पे दो पॉइंट लगाएंगे तो हमें आसानी से महसूस हो जाएंगे अगर वो बिल्कुल पास है कॉपी लेकिन पीठ में ऐसा नहीं होगा आप अंदर 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस करोगे तब पता लगेगा कि दूर में कर दिया है तो दैट डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ इट डिफरेंस एंड दैट शोज ऑन द कॉर्टिकल सरफेस ऑल्सो तो कॉर्टिकल सरफेस में ज्यादा न्यूरॉन किस जगह पे इन्वॉल्व है फेस एरिया पे और पाम एरिया पे और उसमें भी सबसे ज्यादा किसका है अंगूठे का many neurons are involved in the analysis or assessment of information of data. So this representation is proportional to the importance of the body parts where sensations are sorry, where the sensations are arising. तो यहाँ किस से ये सेंसेशन नेगेटिव सेंसेशन या किस से क्या है सेंसेशन उठने का तीनों रिप्रेजेंटेड हियर और जो लैंग है वो आपकी मीडियल साइड में चला है तो दिस इज मीडियल साइड ऑफ द कॉर्टेक्स जीरो लेकर तक तो सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स located in the anterior part of the parietal cortex behind the central circle named as S1 and S2 both areas body parts are represented somatosensorically area 1 and S1 is more extensive and sensations have a high degree of localization. पता लगता है हमें. S2 located immediately from both sides of the body, bilateral communication, and there is a poor localization of the S2 area. So बहुत compressed area है. बहुत कम neurons से बहुत बड़ी body part है. तो actually sensation location कभी नहीं होता है. ये हो गया सर. Cortical gray layer. Gray matter समझते हो? अगर इसमें बदलाव थोड़ा होता है मतलब कमेंट मारते हैं कि तो ग्रे मैटर भी नहीं है इसका मतलब इंटेलेक्ट होगा एनालिटिक कैपेसिटी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कम होती है अगर ये सही नहीं है ये सही नहीं है I have seen witness students who had only one small frontal portion और उससे टीचर डरते थे ये हमारे को दवा नहीं दूंगा तो this is not always कि ग्रे मैटर का नया थोड़ा नया कोई इंटरेक्शन नहीं होगा ऐसा नहीं बट ये मान के करते ग्रे मैटर ज्यादा तो एनालिटिकल कैपेसिटी डेफिनेटली आती ज्यादा होती है ज्यादा है
देखना शुरू करते हैं बाद में करते और न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स की सेल लेयर और उसमें ये कहा आ रहा है तो एलेमस के लेयर इस लेयर को इंफॉर्मेशन हायर और साइड so information are related to the layer 4 or layer 4 that upward literally another cortex from the nervous down becomes the different part of the layer. Sorry. So there one has to receive non now ऊपर की layer of cortex क्या ये कर रही है क्योंकि diffuse non-serving aspect of the lower part of the body, lower part of the brain and the lung. What does it mean? Diffuse क्या करते हैं इसका? From where these things are coming? Especially from the thalamus. Thalamus में कहाँ से आ रही है? बस ब्रेन पढ़ाने तो पता होना चाहिए. Thalamus cortex. Thalamocortical part is what? The fusion. Huge connections are there. Thalamus से दो तरह के connections जाते हैं cortex में. One is that specific thalamocortical. तो specific thalamocortical motor nuclei और ऐसी चीज है. इसे देखो बॉडी specific और इसके आउटलायर specific लगता है. और मेरा part of the thalamus is called the intramedullary thalamus nuclei. Reticular nuclei in thalamus and midline thalamus nuclei. Midline thalamus nuclei, reticular thalamus nuclei and intramedullary thalamus nuclei are giving output to the cortex which is right spread for all parts of the body. So एक country data एक आगे बढ़ती है तो पूरे देश में distribution network is called as the non-specific thalamocortical part. Then layer second and third are information to other various areas which are done and to the opposite side are the normal cells. क्या बात है